Hello everyone. So today we will going to start a new chapter. And the name of the chapter is Maintain Hygiene and Stay Fit. So let's begin the chapter. Chapter 3, Maintain Hygiene, Stay Fit. Importance of personal hygiene. Value talk. It is necessary to remain clean for a healthy life. We should keep our house as well as outside clean. If we do not understand the importance of cleanliness, then we can fall ill. Hence, we should understand the importance of cleanliness. बहुत ज़रूरी होता है कि एक हेल्दी लाइफ जीना, क्लीनलीनेस को अडॉप्ट करना, साफ सुथरा रहना। तो हमेशा हमें अपने आप को भी साफ रखना चाहिए, अपने घर को भी साफ रखना चाहिए और हम अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखना चाहिए। अगर हमने क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो जितना हम सफाई रखेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। तो हमें क्लीनलीनेस के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। केशव had dirty habits. He was not only careless but also too lazy with his cleaning manners. अब there was the boy जिसका नाम था केशव। उसकी बहुत ही गंदी आदतें थी। वो केयरलेस भी था, लेजी भी था और उसको मैनर्स नहीं थे क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन रखना है। Although he was good looking, but he often kept brushing his teeth, bathing and other cleanliness habits. अब वो वैसे तो अच्छा लगता था, प्यारा लगता था, लेकिन वो कभी कभी ब्रश करना छोड़ देता था, कभी कभी नहाता नहीं था, कभी वो अपने हाथ गंदे, उसकी क्लीनलीनेस हैबिट्स नहीं थी। He used to eat food without washing his hands and mouth. अब वो खाना बिना हाथ धोए खा लेता था। His mother tried her best to make him understand the importance of staying clean, but he never followed her advice. अब उनकी मदर उसको हमेशा डांटती भी थी, प्यार से भी समझाती थी कि साफ रहना चाहिए, साफ सुथरे रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, जितना हम गंदी तरीके से रहेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। बट वो समझ में नहीं आता था उसको। One day suddenly he fell ill. एक दिन वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर checked him and gave him medicines and an injection. अब डॉक्टर ने आया, उसको चेक किया, उसको इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी। केशव screamed in pain when the doctor gave him the injection. अब डॉक्टर ने जब उसे इंजेक्शन लगाया तो वो जोर से चिल्लाया। The doctor said, Keshav, if you had been maintaining your hygiene, you would not have fallen ill. डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर तुम साफ सुथरा रहते, अपने हाइजीन मेंटेन रखते तो तुम बीमार नहीं पड़ते। You got a stomach infection as you had eaten food without washing your hands and mouth. क्योंकि तुम अपना हाथ मुंह नहीं धोते और बिना हाथ मुंह धोए तो वैसे ही गंदा से हाथों में खाना खा लेते हो, तो इन्फेक्शन तो होना ही था। Be careful from now onwards and live a healthy life. Otherwise germs will always attack you and will make you ill again. उसने कहा कि अब से अपने आप को साफ सुथरा रखो if you want to live a healthy life. Otherwise germs जो हैं वो हमेशा तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हें दोबारा बीमार कर। केशव अंडरस्टूड अबाउट द जर्म्स एंड टुक इट एज अ लेसन। केशव को समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड द डॉक्टर्स एडवाइस एंड प्लेज टू रिमेन क्लीन फ्रॉम दैट डे। और उसने डॉक्टर की एडवाइस सुनी और उसने प्लेज ली कि मैं वो आज से साफ सुथरा रहूंगा। फ्रॉम देन ऑन एवरीबडी बिकेम फ्रेंडली विद हिम एंड लव्ड हिम। और उस दिन के बाद से सब उससे प्यार करने लगे और वो सबके साथ अच्छे से रहने लगे। द मॉरल इज ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लीन एंड फॉलो हेल्दी हैबिट्स टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। तो डिजीजेस से अगर हमें दूर रहना है तो हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना होगा। लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शन। Keshav was dash boy. He was careless. Suddenly he fell ill. Doctor gave him an injection and Keshav understood about the germs. Fill in the blanks with the words given below. Keshav had dash habits. Dirty. The dash checked him. Doctor. Dash will always attack you. Germs. Keshav understood about the germs. Everybody became friendly with him and loved him. Now let's match the opposite words. Ugly, beautiful, mother, father, clean, dirty, friend, enemy, and give, take. Repeat the words. These are habits, clean. This is manners and mother, pride and doctor. I hope you all have understood.
what is the use of becoming clean and how you can live your healthy life. So you should understand the importance of cleanliness. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Bye.